अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम आपने पहचाना? शारिका, हाँ पहचाना तो है। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, फाइन। चलिए, इट्स गुड टू सी यू एट दिस प्लेटफॉर्म आल्सो। यस मैम, सेम हियर। Let's start, Anjum ma'am, right? Okay, sir. Yeah. So my friends, it's my pleasure to introduce Dr. Anjum Ahmed, Assistant Professor in the Department of Education, Aligarh Muslim University, Aligarh. A very compassionate teacher, a very good researcher, of course, a very good human being. So if you see her qualifications, so unique qualifications she has. She has a master's degree in science, that is environmental science, as well as she has master's degree in English as well. At the Department of Education, in fact, she teaches lot of paper. And one thing is there in Anjum ma'am, that she is a very compassionate teacher. So if you see in communication skills, one thing that's very important is the communication etiquette. And I think we all are teachers, so definitely we should know about these communication etiquette. So the moment I kept this topic in this workshop, definitely I thought that no one be as suitable as Anjum ma'am herself. So I requested Anjum ma'am to do the needful. So definitely her complete CV is available on the web page of the Department of Education. If you want to know more about her, you can know through that web page. But at this juncture of time, since your time is very important, of course, and we are getting late, it is 11:48. So I'm just relying on this short introduction. And with this short introduction, I'm handing over the session to Anjum ma'am. So Anjum ma'am, it's over to you. Okay, thank you, sir. Assalamu alaikum. Very good morning to all of you. And thank you, sir, for such a generous introduction. At this junction, I would also like to be thankful to Dr. Faiza Basi ma'am, the director of UGC HRDC, and of course, Professor Sajid Jamal Saab, for inviting me to deliver this lecture on communication etiquette. So this is one of the topic that I'm going to talk to you about is something that we all are very familiar with, and we are practicing communication etiquette, but there's something more to it. And it's not that easy also when we say that we have to be very full of that etiquette, and we have to, because etiquette is something very dynamic. So in this in my presentation, I will be walking through how we are supposed to communicate when we are messaging or when we are emailing or when we are using internet or even for a telephonic conversation. And I had a brief glance over the participants list, and it was good to see that there is many participants are from, they have school teachers, some of them are assistant professors, some of them are associate professor, and some of them are students also. So it's good to see such a huge variety of different learners with different experience that have joined at this platform. So I welcome you all again. So let's start with this presentation. So to begin with, I'll be talking about the objectives of this session. So I'll be familiarizing you with what you're going to go through in this particular presentation of mine. So of course, as I'll be laying down the foundation of communication, so I'll be talking about a little bit of the communication and the concept of communications. And I'll be also identifying the different style of communication, how we communicate with others and what are the different styles. And of course, when we're identifying, so definitely we will also be identifying with that particular style if we are practicing it or not in our teaching profession or in our interpersonal relationship. Then I'll be coming to the crux of the topic, that will be comprehending what the communication etiquettes are with different examples. I will be illustrating the different etiquettes, and then
ultimately you will be, inshallah, conscious about the etiquettes while we are, telephoning, while we are messaging, emailing, or using the internet. So that is the objective of the presentation or the session. So like communication, it does sound very easy, right? I mean, it sounds very simple that we're just communicating. It's an information that is exchanging between two or more than two people. But in fact, communication is a very complex system. And the transmission of the message from the sender to the recipient, it is affected by huge variety of, you can say, different intervening variables. It could be your emotions, it could be your cultural settings, or in fact, even the medium through which we are communicating, or our location as well. Like, for example, this is an online platform in which I'm communicating with you. I'm sharing you my ideas. That ideas could be in the form of written text, some illustrations are there, my voice will be modulating what I'm going to express. I'll be using some signs, and of course, some of my gestures will be quite visible to you through this camera. But nonetheless, there is still some intervening variables that I might not be able to communicate to you well because we are at the online platform. Had it been at the offline platform, things would have been different. Of course, a lot of emotional connections we can formulate during the offline sessions, right? When we'll be interacting with one another, we'll be asking questions. So it would no longer be rhetoric questions. Like I'll be in the online session, I'll be asking questions, but I won't be expecting you to answer promptly because we're having another 15 minutes by the end of the session in which we'll be discussing the issues and discussing the any queries or any questions that you have in mind. So in the online, so that is one of the constraints I do find, that when we are dealing with online sessions, that we're not able to communicate with that much emotions, and most of our questions are rhetoric in nature, right? So if you look broadly, communication has three parts. It has sender at one end, the message that is supposed to be transmitted, and the recipient at the other end. Of course, the medium through which it is traveling, that will be different, spoken, it would be written, it could be like, using different gadgets, online, offline, and so on. And communication as a teacher, it's needless to say that it is such an potent skill for a teacher. And I think you will agree कि अगर हम लोग communication में lack करते हैं, if we're not able to communicate the information rightly to the child, rightly to the learner, तो हमारा पूरा जो ये essence है of teaching, that will be crumbling down. I mean, it won't be fulfilling the objectives. जो हमारा mindset है, हमारे जो जहन में जो information है, whatever it is, we want at least that particular information to be imbibed, to be assimilated by the learners who are listening to it. So basically those ideas, those neural connections जो मेरे जहन में है, मेरे mind में है, या मेरे ideas हैं, theirs are supposed to formulate those neural connection in your mind, in your brain set. So definitely that requires hard work. That requires, at the end of the day, I have only one word, that for communication, what it requires is practice. कोई भी, it's not like, बहुत कम लोग होंगे जो वाकई में गॉड गिफ्टेड होते हैं, कि the moment they come to this world, they are good with language acquisition, उनका माहौल भी उस तरह अच्छा मिलता है कि जिसमें बहुत उम्दा they can communicate, they have the words, the correct tone कि जिसमें उनको communicate करना है. Of course they're God gifted, but rest of us, we have to, you and I, हमें practice करना, and with practice आप देखेंगे कि जैसे जैसे हमारा experience बढ़ता जाता है, उतना ही हम कम्युनिकेशन को भी किस तरह स्मूदन आउट करना है, एंड किस तरह हमारी डाइवर्स जो ऑडियंस है उनको कैसे डील करना है. एंड एवरी टाइम इट्स अ लर्निंग प्रोसेस फॉर अस. हम ये नहीं कह सकते कि आज हमने ये पर्टिकुलर वी अंडरवेंट थ्रू दिस ऑनलाइन कोर्स, या हमने ये चीज करा, नाउ वी हैव बिकम द एक्सपर्टी. Unless we don't put it into practice, unless we don't practice it every day in our life, because as the audience are changing, so is our communications. So it's highly dynamic. एंड कम्युनिकेशन मोर सो ओवर, आप इस तरह भी समझ लीजिएगा कि कम्युनिकेशन सिर्फ ह्यूमंस में नहीं होता है. आप देखिए पूरे नेचर में एवरीथिंग इज कम्युनिकेटिंग ईच अदर द मैसेजेस. When it comes to you can see the bird community, the animal community, and even including the machines. I mean, how we communicating to the machines, and how machines are in return communicating to us. So it's all boils down to how we are communicating. So language is one of the very important forces that is uniting us, and that is where we are able to communicate one another.
अच्छा, एक और बात, हो सकता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन जहाँ पर आपको लैंग्वेज भी नहीं पता है, जैसे मिसाल के तौर पर आप ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ पर कोई मुख्तलिफ लैंग्वेज बोली जाती है, वहां पर इवन द बेसिक टर्म्स, हम किस तरह उसको वी आर माउथिंग दोस टर्म्स, हम एक्शन से कैसे बता रहे हैं, मगर वी ट्राई आवर बेस्ट कि हमें कम्युनिकेट करना है। हम किसी शॉप में जाएं, वहां पर हमें नहीं पता पानी, वहां पर दूसरी लैंग्वेज बोली जाती है, ना वो पानी समझ रहे ना वो वाटर समझ रहे, तो वहां पर हम किस तरह बताएंगे कि ग्लास, विल होल्ड अ ग्लास एंड विल से दैट वी वांट वाटर, वाटर टू ड्रिंक, राइट? सो हमारे जो जेस्चर्स हैं, हमारे जो यू कैन से आवर बॉडी लैंग्वेज in itself, other than what we are speaking, our body language is also communicating a lot. तो हमें हैंड इन हैंड दोनों चीज पर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, एंड दोनों चीज से के आदाब हैं, दोनों चीजों के एटिकेट्स हैं। वही एटिकेट्स हम लोग अभी देखेंगे कि जब हमें बोलना होता है, हम जो हमें शोकेस करना होता है थ्रू आवर जेस्चर्स, या हमें जब बोलना होता है कि हाउ डज इट मैटर। Now, let's look at the functions of communications. I'm still laying the background regarding the communication. Communication हम क्यों करते हैं? मुख्तलिफ हमारे पर्पसेस हैं, मुख्तलिफ उसके फंक्शन हैं। पहला है, अगर हमें किसी को रिक्वेस्ट करना है, राइट? Instantly, if we want to request somebody, we seek the permission. Either we point towards that object, है ना? अगर हमें कोई चीज चाहिए, जैसे छोटे बच्चे, अगर if you look at the classroom scenario, if it's a request, the child wants to go out, he wants to go to the washroom, so he'll point out कि ma'am I want to go to the washroom, right? Body gestures भी है, and plus the need is felt by requesting, right? So there will be some kind of a communication that is being communicated from one sender to the recipient. The second will be to get your attention. और उमूमन क्या होता है, जब भी हम कोई स्ट्रेंजर से ब्लॉक कर रहा है हमारा रास्ता, तो वी से एक्सक्यूज मी, है ना? दैट इज अ वेरी कॉमन टर्म दैट वी यूज, दैट एकदम से किसी का टेंशन आना, इवन क्लास में जब बहुत शोर हो रहा है, देन वी यूज सम अदर थिंग्स टू गेट इट अंडर कंट्रोल, है ना? आप लोग अक्सर टीचर्स क्या करते हैं, दे स्टार्ट टैपिंग ऑन द टेबल, दिस इज अ जेस्चर, दे वांट टू गेट अटेंशन। और if you know it's very over loud class, आपकी आवाज वहां तक नहीं पहुंचेंगी, so it's no use shouting, है ना? तो उसमें फिर you use some other kind of a thing, आप उसको बेल बजाएंगे या आप डस्टर से टैप करेंगे, so it gets the attention of the audience. So once it gets the attention, so definitely now is the time that you communicate, right? So the time, जब functions of communication का time management is also important, जो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि टाइम को किस तरह कम्युनिकेशन से हम लिंक करेंगे, राइट? थर्ड इज टू रिफ्यूज और टू रिजेक्ट। किसी चीज को अगर आपको बिल्कुल रिफ्यूज करना है, ईदर यू से इट नो, स्टॉप, और यू शेक योर हेड, यू से नो, है ना, नहीं चाहिए, या यू हाथ से बताएंगे, आप अपने चेहरे से बताएंगे। सो दैट इज वन कम्युनिकेशन जो हम इनिशियली आप देखेंगे जब व्हेन द चाइल्ड इज लर्निंग, है ना, तो आप देखेंगे कि ये सब चीजें इनिशियली हम बच्चों के जब लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, जब उनकी साइकोलॉजिकल जो डिफरेंट माइलस्टोन्स पर पहुंचते हैं, तब ये चीजें बहुत वी कैन से प्रोमिनेंट होने लगती हैं, है ना? अगर बच्चे को अगर कुछ अटेंशन चाहिए, फॉरन इफ इज नॉट एबल टू स्पीक, उस टाइम उसकी लैंग्वेज नहीं है, ही विल क्राई, he will cry ताकि उसको अटेंशन चाहिए अपनी मदर का या किसी का, राइट? एंड इफ ही डज नॉट वांट एनीथिंग, उसको खाना नहीं है, उसको मेडिसिन नहीं लेनी है, तो ही विल रिजेक्ट, ही विल रिफ्यूज बाय एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ। तो वहां पर इमोशनल एक्सप्रेशंस हो रहे हैं, एंड दैट थ्रू इमोशनल एक्सप्रेशंस they are expressing. Then fourth comes to comment on anything. For example, if you want to say, if you want to make a point that this bag is yours, you know, or yeah, this paper is mine, yeah, this notebook is mine. So you hold up that object and you say, this is mine, or this is not mine. Whose is it, right? So you're commenting on it. So, or when in a class, students khatam kar lete apna homework, or they finish their exam paper, so they say, "Ma'am, finished." They comment on it. This is the comment they're giving, and their function or their purpose is that you can take the paper from them. So that's the comment they want to express to the teacher. Then communication is also about giving information. हम तो यही इसी एक मेन फंक्शन पर वी बिलीव इन इट कि कम्युनिकेशन का सिर्फ मतलब है कि इंफॉर्मेशन देना, और इंफॉर्मेशन अगर टाइमली नहीं देते या सही तरीके से नहीं देते, सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस दैट यू कैन सी इन दिस कार्टून, कि आप जब इवन
when you want to put the patient from the stretcher onto the OT table, उस वक्त भी आपका communication कितना timely और कितना important है. How even जब आप 1, 2, 3 आप कहेंगे तो you know at that particular जब 3 कहा जाएगा तब आप patient को उठा के stretcher पर रखेंगे. उसी तरह if you remember sports day में अगर वो आपको it's a race 1, 2, 3 or if there is a kind of a sound that is to be emitted for the racers to run. So that is instant communication that actually will be able to undergo, there will be an action that will be undertaken. So to give information is, of course, the ultimate purpose that we all know about what communication talks about. Then comes about to seek information. कभी हमें information लेनी पड़ती है. You want an information, you want to seek the permission, or you want to seek an item, or you want to seek, there's some Googles को भी when we machine से भी हम permission लेना चाहते हैं, information लेना चाहते हैं, so we put the information there, input हमारा होता है, input होता है, then we get the output. If you don't understand anything, you put your hands up, कि ma'am, please आप ये चीज explain करिए, or I have a doubt, can you please repeat it again? So you are seeking information. And of course, communicating your own physical and emotional feeling. You can express it through your words. You can express it through your actions. Your eyes can speak a lot about how you feel. This umuman jo bacche जो बीमार हैं, if their stomach hurts, even when they're not speaking, आप देख सकते हैं उनकी आंखों से दर्द, you know, they're holding their tummy, or they're getting angry. You can see this portion getting very tensed up, or they're becoming red. And they're expressing that emotions. It's not necessary they won't be vocally they will be expressing their anger, but the thing is they're expressing through their body language, right? And the another function of communication is the social routine. And I think this is also one of a very potent, you can say, connection that we find that we form between two individuals, or more than two individuals. It's like something that you cannot imagine starting a conversation without having a social routine. मिसाल के तौर पर अगर मैं आप इस प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन करती हूँ and right away I would have started my lecture, मगर हो ही नहीं सकता है जब तक आप अस्सलाम वालेकुम नहीं कहें, गुड मॉर्निंग नहीं कहें. You know, friends से मिल रहे हैं, you say hi, hello, and you end also with bye, thank you. I mean, these are the things, these are the social routine that you are linked with. And you have to send those greetings in order for your conversation to start, in order for you to communicate. कभी भी आप शॉप में जाएं या कभी भी आप ऐसे ऑफिस में जाएं, instantly there is some, it's ingrained in our etiquettes. We start with hello, or we start with good morning, and then हम अपनी बात आगे रखते हैं. This is where we get the ball rolling, and once we establish that connection, and then we're able to perform that proper conversation or that proper communication. So it comes with the social routine as well. Then another function of communication is to make choices. What you have to choose, or what you prefer, or what you don't prefer. Clearly, उस चीज को express करना. And you know, children are very good in expressing. And expressing their own choice. अब तो they're becoming very vocal regarding it. है ना, उनको क्या चीज चाहिए, क्या चीज नहीं चाहिए, या कौन सा गेम खेलना है, कौन सा नहीं खेलना. So even when you are, and it's high time that when you have choices, then you will be definitely be more inclined towards communicating. Please आप म्यूट कर लीजिएगा. ये देखिए, ये ना मैंने ज्वाइन कर रखा है, ये मेरे बेटे की है, तो नाम भी ना सैयद मुशर्रफ आ रहा है लिखा हुआ, और मुझे नाम चेंज करना है. कैसे करूँ जी मैं? Better now. Please carry on. Okay, thank you so much. So okay, that is one of the perks of online teaching. Offline with our control. This is the thing, you know, even with communication there is a control element. Jo online sometimes we lose that kind of, you know, how to control it. So anyways, so coming back to the function of communication is to give direction. You're doing very well. Please carry on. Quite impressed.
Please carry on. Thank you. Another thing is to give direction. So how are you supposed to give direction to somebody? You ask somebody to sit down, or you ask a child, please throw this in the dustbin, throw it into the bin, or you say, please listen to me. You're giving the direction. And mind you, when I'm talking about direction means your perception. आप किस नजरिए से वो डायरेक्शन देना चाह रहे हैं, and दूसरा इंसान किस नजरिए से वो समझना चाह रहा है. जैसे ये जो मैंने आपको जो ये पिक्चर दिखाई है पीपीटी में, दिस इज ऑल अबाउट परस्पेक्शन. आपका पर्सपेक्टिव क्या है, कि किस नजरिए से आप देख रहे हैं, एंड आप दूसरे को क्या समझाने चाह रहे हैं. आप उसको फॉर एग्जांपल यू आर शोइंग देम दैट यू मेंट इट टू बी 6 but the other person is perceiving it's 9. So do you think this is an effective communication? No. So for an effective communication, it also entails your perception and how you're communicating it well. By the end of the day, आपका perception should match with the perception of the audience. Then you have become a successful communicator. You have become successful in communicating the ideas, right? Then coming to influence or to persuade, communication also requires it's a position in which you want to give an order to somebody, right? You want to influence somebody. You tell somebody that their position provides evidence of why they are right. So you have to be able to, as a teacher, we are able to also persuade. ये ज्यादातर आप देखेंगे ये वाला जो communication होता है, influence का, we are influencing our students. Persuasion का, when we are interacting with their parents, we are persuading them. तो वहां पर हमारा ways of communication will differ. Our etiquettes will differ accordingly. Then comes to warn. And this is we do very good job of as a parent and as a teacher. हम बच्चों को हमेशा ताकीद करते हैं ना, be careful, don't drink that, yeah, don't touch that. So every time we are warning them, because we communicate the danger, or we're concerned about the other person. So definitely we'll be warning. So that's another type of communication, function of that communication. Then comes to motivate or encourage. ये तो मुस्तकिल हम लोगों को एज अ टीचर करना है, एनकरेज करना है, पॉजिटिव फीडबैक करना है. सो जब कम्युनिकेशन में पॉजिटिव फीडबैक आपको नहीं मिलेगा, you know that you're not getting the proper prompt or the proper response from the receiver, तो वहीं पर आप देखेंगे the communication starts to malfunction, and वो communication धीरे धीरे जाकर it stops or it ends or it might not be that effective. So we have to encourage. And जब हम बीच में सवाल पूछते हैं, तो सवाल पूछने जो questioning जो method as a teacher that we train even our prospective teachers regarding it, वही तो है ना कि communication को कैसे आपको चेन रिएक्शन बनाना है, इसको कैसे एक चेन को दूसरे चेन या दूसरी जो कड़ी से आपको जोड़कर रखना है. दैट इज थ्रू क्वेश्चन, आंसरिंग, मोटिवेटिंग, एनकरेजिंग देम, and then we go on with that kind of a process. So giving positive reinforcement is very important, that you're doing great or you can do it and this is perfectly well, so that other person will be motivated enough to speak more or to talk more or to communicate more regarding that particular topic. So you see these 13, and I know we are all practicing this in our teaching professions, and we are well aware that how these all functions of communication, how they work in the classroom environment, and how they might differ when we are in our personal sphere or when we are in our public sphere as well also. So if you look at the communication cycle, this is one of the, you can say, the conceptual map in which we can see how the sender, the message, and the receiver, and the feedback. This is what I was talking about. It's a cycle. You cannot just have sender, message, and receiver. From receiver also we need that feedback. And that's interesting because, and that's pertinent for the communicator, because unless we don't know of our audience, कि वो उनको समझ में आ रहा है, समझ पा रहे हैं कि नहीं, हमारे ideas उनको communicate नहीं हुआ है कि नहीं, different ways you can get feedback, through question, the smile, the expression on their face. It's more than enough that it communicates so much to you. And once you get it back, and अक्सर ये होता है कि जब आप public speaking भी आप करते हैं, larger audience को आप deal करते हैं, वहां पर जाहिर सी बात है आपको feedback कैसे मिलेगा? Feedback आपको last में उनकी तालियों के जरिए when they appreciated, or standing ovation होता है, they stand up and they clap, and that feedback, that moment that you cherish, that you know that your words, they have felt it, they know it, and it has, like kind of, they have absorbed it or assimilated it. इससे बढ़िया
क्या बात हो सकती है बताइए, जो मैं कहना चाह रही हूँ या जो आप कहना चाह रहे हैं, that other person के उसके दिल तक उतर जाए. So it's not only in their mind that neural connection, it's that they feel it even in their heart. So if there are many researchers which have given different findings regarding which is the how much percentage is the verbal, is the body language, your tone. So this is from one of the research findings that it's not only the information that you communicate, and you'll be so surprised to know 7% is only verbal, जो हम बोलते हैं. बाकी का हमारा 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज है. आई नो ऑनलाइन से आप very proper body language, I might not be able to communicate with you, but my tone, now my power on online platform is my voice, my information, my tone. That will be, I'll be communicating through those words and tone, and that is my power, because some of the gestures, of course, it's visible, my hands are visible to you, okay, my facial expression is visible to you. So even in the camera, when you're looking at the camera, your facial expression, your tone, you can really make that a powerful enough. So effective communication, like Jim Rohn has rightly said, that effective communication is 20% of what you know and 80% how you feel about what you know. So, so there is you can say a very fine line between being confident in what you know and how you're expressing, and of course, being arrogant also. There's a very fine line. So your communication, जब इसमें etiquettes में भी हम देखेंगे कि हमें वो line cross नहीं करना है. Our being confident speaker, being confident communicator, we should not cross that line and become an arrogant communicator or an arrogant speaker, right? So the two things that I talked about, gestures and facial expression, they are something that I would like to draw your attention to. So gestures are you aware of how you look to others? आप दूसरे के परसेप्शन या दूसरे की नजर से देखना बहुत जरूरी है. और उसके लिए बेहतरीन तरीका होता है कि या आप अपने खुद रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप सुने, या यू कैन आस्क समबडी टू, व्हेन यू आर गिविंग अ लेक्चर इन द क्लास, यू कैन आस्क समबडी, योर कोलीग्स, टू मेक अ वीडियो ऑफ योर्स, है ना, एक कोई वीडियो बनाए एंड आस्क देम टू गिव द ऑनेस्ट फीडबैक. तो कई चीजों पे कोई ऐसे हैबिट्स भी होते हैं जो हम नहीं जानते, बिकॉज एट द मोमेंट व्हेन यू आर स्पीकिंग यू आर so much engrossed with your ideas, how you're communicating with your ideas. तो कुछ ऐसे भी आदत होती हैं या आपके nervous gestures होते हैं. Some people, they have those hand shaking, okay, and especially, and they want to hold on to something. तो अगर वो paper भी पकड़ेंगे तो the paper will also shake, right? So you know that, and especially, and when you're looking into that paper which is already shaking, so of course that is also giving you the signals that you're getting nervous. So you have to understand what your nervous gestures are, what are your habits, and what people are aware of regarding that, and start working on that, and of course that will also help you to improve. फिर आता है आपका facial expression, आपका चेहरा कितना कुछ communicate करता है, especially the eye communication. So 90% of our personal communication calls for involvement, how you're involving them, and online में it's all about involvement, because हमने जो 2 साल हमने गुजारे हैं social seclusion में, and आपको पता है pandemic में, उस वक्त the only thing that we really missed was that personal involvement. We wanted to see each other's person's face, not on the screen, but आमने सामने देखना, to see that, having that eye contact, to having that kind of showing that emotions, and we missed that. So you see that eye contact may be किस तरह we grasp the attention, and जो हम लोग अपने prospective teachers को हम सिखाते हैं, that you hold on to the gaze for 5-10 seconds, then you move on to the another person. और सबसे उम्दा होता है S type. You start right from the corner, जैसे आपका class का corner है, from there you go, and then you address the front also. S type आपको इस तरह करना है, and of course smiling in between, it improves your face value. It's not, some people, they have such a stoic expression. जब शुरू में introduction होता है, then they are smiling, या जब खत्म होता है, then they smile, they say thank you. कहीं ना कहीं you have to have that smile, because bringing that expressions, आपको खुद लगेगा जैसे आप अपना कोई emotion express कर रहे हैं, you can see that reflection in the audience. When you smile, you can, and that's something of course you miss online. but जब offline में आप देखिएगा, जब अपने students से when you smile and talk, it so happens like like mirror neurons, it works, and the moment that you see somebody smiling, you smile back.
Okay, but that smile, of course, how long are you smiling or how long are you holding up the gaze, it counts to that. Zyada lamba time agar if you just look at one person and smile, so that's creepy. Okay, that's not welcome. तो ये भी चीजें देखना है कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन कैसा है and how frequently you are using your facial expression. Now coming to my second objective regarding the whole styles of communications. क्योंकि styles of communications में आप देखेंगे कि आपको अपना style identify करना बहुत जरूरी है. किस category में are you lying? Are you lying in the aggressive one, the submissive one, or the assertive one? Now we have to identify the different kind of styles. Aggressive style क्या होता है? See, those people who communicate in an aggressive tone, usually they are perceived as being very selfish or unwilling to compromise. एक तो उनका टोन ही ऐसा होता है. They usually attack the other person instead of expressing a need. है ना, हमेशा डिफेंसिव मोड में बात करते हैं. That blaming time, जैसे कोई कोलीग आया, उसने आपको सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, आपने कहा वालेकुम अस्सलाम. Even greeting sometime can be so aggressive because your emotions are expressed through even the way you greet. इसलिए कहते हैं ना कि जब फोन कॉल आप रिसीव करें, smile and receive the phone call, because once you smile and receive the phone call, आपके इमोशंस वो आपके अल्फाज में और आपके टोन में झलकता है कि that you are smiling. So you see that aggressive communication किसी का बहुत रूखा अंदाज होता है बात करने का. It could be many reasons behind it. Either they have a lot of things on their head and they don't know how to communicate properly, or they are dealing with such difficult audience कि वो उनकी आदत में शुमार हो जाता है. So you have to identify the correct the tone that you're using, how you're communicating with them, and you don't have to be defensive every time, or you don't have to be attacking the other person with the language. So this is where you say that ज़्यादातर aggressive communication होता है. एग्रेसिव कम्युनिकेशन में वही चीज आती है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था. Arrogant communicators also can become subjected to aggressive communication because they're so arrogant, they're so full of themselves. उनकी इतनी knowledge है कि उनको अपनी knowledge को showcase करने के लिए they adopt that aggressive tone, that they want to dominate, and they think that by this particular aura that they're creating, उसके वजह से कि दूसरा जो इंसान होगा वो खुद ही नहीं बोल पाएगा या खुद ही आंसर नहीं करेगा या चैलेंज नहीं कर पाएगा. तो ये ऑरा क्रिएट करने के लिए भी पीपल समटाइम दे अडॉप्ट दिस काइंड ऑफ एग्रेसिव कम्युनिकेशन व्हिच इज नॉट वेलकम, स्पेशली हमारे टीचिंग प्रोफेशन. आपको एग्रेसिव टोन बिकॉज यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल. आप जैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपके बच्चे, आपके स्टूडेंट्स, दे आर रेप्लिकेटिंग. They are even using the same tone. They are also using the same gestures. And even when it comes to communicating with their parents or with the higher authority or even with the non-teaching staff, क्योंकि हम सब लोगों से डील करते हैं, तो हमें अपना कम्युनिकेशन कैसा रखना है. Because even when you're communicating with them, there is a third person who might be noticing you. Those could be your children. Those could be your students. Not only in this sense, आप इस तरह भी सोचिए कि कभी आप outside the school आपकी मुलाकात बच्चों से हो, कोई दुकान में हो, कोई फंक्शन में हो, वहां पर आप दुकानदार से कैसे बात कर रहे हैं, वहां रिक्शा वाले से आप कैसे बात कर रहे हैं. So you can't have two-faced communication. आप class with all polished and very nice, using good words and good tone, and once you're out, you are just a different self. So ये भी है कि aggressive जो communication है, ये चीज को हमें avoid करना क्यों जरूरी है, and we don't have to be arrogant communicators. उसके साथ साथ उसके दूसरे, इट्स अ स्पेक्ट्रम अगर देखा जाए. एग्रेसिव कम्युनिकेशन ऑन वन एंड, पैसिव कम्युनिकेशन ऑन द अदर. वो दूसरे एंड पर है. पैसिव मीनिंग हर वक्त कंप्लायंस एंड हर वक्त यू वेरी लाइक यू feel very safe not to react. इसलिए बोलना ही नहीं कुछ. You don't want to rock the boat. You don't want to stir any kind of a commotion or emotions, anything. अगर usually क्या होता है कि ये जो humility, this is not humility, this is आपका you're losing your confidence in communication. You become passive. आपको नहीं कर, आप अपनी बात भी सही तरीके से communicate नहीं कर पाते. तो उम्मूमन देखा गया है कि जब aggressive communication होता है, if a sender is very aggressive, so the recipient might become very passive because वो अपनी चीज नहीं बता पा रहा है, and the whole purpose is to dominate over the whole communication. So you don't want the other person to speak, you don't want the other person to communicate या to express themselves. तो ये this go hand in hand. तो ये दोनों end है स्पेक्ट्रम के. मगर हमें क्या अपनाना है? बीच का रास्ता.
And the middle way, or the middle path, is the assertive communications. So assertive is, you can say, is the healthiest form of communications, in which we are naturally expressing ourselves. So there is a self-esteem intact with confidence. So confidence is important. Okay, confidence के साथ हम कैसे करें without any manipulation, and we are satisfying the mutually, and we are coming to the mutually satisfying solutions. आपके solutions, हमारे solutions. We are giving the other person time to communicate. We are giving the other person respect to communicate. So that kind of a leverage, that kind of a mutual, you can say, exchange of information, exchange of emotions, it's going on in assertive. But ऐसे नहीं कि we are letting go of our values, or letting go of our the points that we want to communicate, or because the other person might be, even if he's a learner, is of different age group, whatever it is, whatever be the circumstances, आपका जब assertive communication होगा, so you will be creating mutually satisfying solution for both the parties, or for the larger audience, in fact. तो हमें as a teacher, and अगर हमें students को भी, if we want to set an example, assertive communication, it's a win-win situation, है ना, दोनों की तरफ। अक्सर हम ये देखते हैं कि जब conflict resolution की भी बात होती है, तो इसी तरह की हम assertive communication पर ताकीद करते हैं, और उसका inculcation के ऊपर तवज्जो देते हैं। Now coming to, now that was me laying down the background. अब roughly अब आपको पता चल गया communication, the styles of communication. Now what are the communication etiquettes? है ना? तो अब effective communication, you know, it's an integral part of a very productive कोई भी working environment में अगर हम होंगे, है ना? We have messages, video chats, and which makes the whole workplace communication very faster and very convenient also. But at the same time, it also creates a lot of challenges. How are we supposed to convey the messages from different resources? राइट, बिकॉज जब आप आईसीटी को जब हमने इंटीग्रेट अपनी लाइफ में कर दिया, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें हर तरीके से सोचना है, हमारे हर इंटेंशन शुड बी वेरी क्लियर हाउ वी आर कम्युनिकेटिंग. So of course, good manners reflect something from inside. It is an innate sense of consideration for others and respect for self. तो बेसिकली एटिकेट्स में, आपके आदाब में, आपके गुड मैनर्स में, आपके अच्छे जो आदत है कि आप कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है और कैसे ध्यान रखना है, उस चीज़ को भी हम देखेंगे. सो अल्टीमेटली वी सी दैट गुड कम्युनिकेशन एटिकेट्स, इट इंक्लूड्स बिहेवियर और हमारी स्ट्रैटेजीज. एंड ऑफ कोर्स, अदर देन रिलाइंग and passing on information, we are also we are making sure that we are maintaining positive relationship with the other person. ये भी हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव है, कम्युनिकेट करना, और किस दायरे में कम्युनिकेट करना कि वो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप कायम हो जिस इंसान से, चाहे वो आपके सुपीरियर्स हो, आपके कोलीग्स हो, आपके क्लाइंट्स हो, स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स, एनी स्टेक होल्डर. बिकॉज इवन इन योर पर्सनल लाइफ, आपके स्पाउस हैं, आपके बच्चे हैं, आपके इन लॉज हैं, whatever interpersonal relationship we have to maintain a positive relationship. So सबके अंदर एक दायरा है, एक communication etiquettes को follow करने के लिए. So even if you look at a dictionary, so etiquette is defined as a conduct or procedure requiring by good breeding. गुड ब्रीडिंग मतलब आपकी परवरिश पर बहुत डिपेंड करता है, आपकी ग्रूमिंग पर बहुत डिपेंड करता है, और प्रिस्क्राइब बाय अथॉरिटी. तो आपकी फेमिलियल क्लाइमेट से काफी कुछ आप कम्युनिकेशन एटिकेट सीखते हैं. फिर बाद में जैसे ही आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, आप फैमिली क्लाइमेट से अपने स्कूल क्लाइमेट में जाएंगे या वर्क प्लेस में जाएंगे, तो वहां पर भी कोई अथॉरिटी आपको प्रिस्क्राइब करेगी कुछ सोशल सेटिंग में कि आपको किस तरह बिहेव करना है, किस तरह बिहेवियर के साथ साथ आपको कम्युनिकेट करने के आपके एटिकेट्स क्या हैं. सो दिस इज बेसिकली डिफाइनिंग व्हाट एटिकेट इज. एंड अदर देन दैट, एटिकेट्स इज ऑल्सो, इट्स नॉट ओनली कि आप बिल्कुल फॉर्मली सूट में आप फंक्शंस अटेंड कर रहे हैं, बहुत फॉर्मली आप बोल रहे हैं. इट इज मोर देन दैट. अगर देखा जाए कम्युनिकेशन एटिकेट्स में बहुत सी चीजें आती हैं. And another important thing which is a very fundamental part of etiquette, is that by understanding the etiquettes, we are also, saving ourselves from embarrassing moments and embarrassing situations. अक्सर होता है जब आपको नहीं पता है कि इस माहौल में कैसे बात करना था, कैसे अल्फाज यूज करने थे, कैसा टोन मेरा होना था, या what should be my body gestures, तो कभी आपके लिए बहुत embarrassing situations भी हो सकते हैं.
तो जब एम्बैरेसिंग होगी तो तब वो जाहिर सी बात है जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप कैसे हो पाएगा फिर, राइट? तो विद एम्बैरेसमेंट ऑफ कोर्स विद शेम वी विल बी क्रिंजिंग। जब क्रिंज होंगे फिर हम धीरे धीरे पैसिव कम्युनिकेटर बनेंगे, क्योंकि अब हमारे साथ एक बहुत खतरनाक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुआ था जिसकी वजह से नाउ यू डोंट नो हाउ टू फेस दोस पीपल अगेन or how to face that audience again. So it will haunt you. So you see that in order to avoid that kind of an embarrassing situation, it's important that when we are building a strong relationship between people, we know कि पहले से हमें पता है कि हम किस एनवायरमेंट में हमें बात करना, कैसे माहौल में बात करना है और किससे बात करना। तो ये सब चीजें हमें क्लासिफाई करना, उसको स्टडी करना बहुत जरूरी है। एंड मोर ओवर एटिकेट्स आप देखेंगे वो वक्त से जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है या कल्चर वाइज भी हम देखेंगे हमारे एटिकेट्स बदल रहे हैं एंड दे आर चेंजिंग। सो इट्स हाई टाइम दैट वी अंडरस्टैंड कि व्हिच इज द चेंजिंग ट्रेंड। और अभी जो ट्रेंड चेंज कर रहा है जो हो रहा है, कैन वी इंक्लूड दैट इन आवर नॉर्मल कम्युनिकेशन विद आवर सुपीरियर्स? कैन वी इंक्लूड दैट इन आवर रिटन और स्पोकन कम्युनिकेशन? ये भी सोचना जरूरी है। हर ट्रेंड या हर चेंज को इनकॉर्पोरेट करने से पहले we have to think about it, because if it is harming or if it is not building that strong relationship, so usko include karna behtar nahi hoga, right? And of course generation wise also things matter, because how are etiquettes being changed in the digital era, that's another issue that we have to look into। क्योंकि डिजिटल एरा में आपको बताया है उसको स्टडी करने के लिए सबसे अच्छा जो मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ इज थ्रू द डिफरेंट जनरेशंस। एंड ये जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने इन्होंने चॉक आउट करा है एंड यू कैन रीड मोर रिगार्डिंग दिस डिफरेंट जनरेशन। नाउ व्हाट हैपेंस, देखिए अब इस तरह समझिएगा, बिकॉज आप जब कम्युनिकेट कर रहे हैं, so we are dealing with different generation people. We have the baby boomer who were born between 1946 and 1964. So 25% of our today's world workforce is baby boomers. So it could be our seniors, it could be at the head of the department, हमारे principals हो सकते हैं, right? Our retired teachers, they will be in that particular age group. Of course, for them, they are very highly adaptive to the workplace, you know, work centric उनका अप्रोच है। उनकी जो उनकी जो आप कह सकते हैं कि जो उनका जो बात करने का तरीका और उनका जो कम्युनिकेट करने का तरीका, it is always laden with values and with words and good vocabulary. You see them talking, right? Because they're good at it, because once they एक तो experience है and plus the kind of language inculcation they had, the kind of exposure they have, you find the baby boomers are good at it. Then we have Generation X between 1965 and 1980. And this is the generation soon after the World War. So 33% of the workforce are there. Okay, even they're addicted to work. And they're, of course, they did not suffer as much as the baby boomer stage unhone jaise suffer kiya. But it is during this stage that the technology started advancing, you know. And magar ye smartphones पर इतने dependent है, जो हमारे पास जो चैलेंजिंग सिचुएशन आती है वो आती है जनरेशन वाई, जेन वाई, मिलेनियल्स कहते हैं, या जेन जेड या जेन जी जनरेशन जिसको कहते हैं। तो जनरेशन वाई जो मिलेनियल्स है, इसमें से हमारे रिसर्च स्कॉलर्स, हमारे कोलीग्स, हम वी आर टीचर्स आते हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे वो जेन जेड एंड अल्फा जनरेशन, उसके बाद वाला जनरेशन होगा। So let us first look at Gen Y. 35% of today's workforce is Gen Y. And we find they're the first multi-screen users. Social media इन्हीं की ज़माने में आई है, and the whole culture of selfie was born with them. And in fact, एक Times magazine में आया था कि Generation Y को me generation कहते हैं, because it's all about themselves, you know, all focused about themselves. And उससे भी ज़्यादा focus हम देखेंगे, and उससे भी ज़्यादा हम dependent on technology भी देखेंगे, वो Gen Z generation है. In fact, it is they are marked by the internet, or you can say it is almost ingrained in their DNA. And आप देखेंगे they love to multitask, and as a result they have very short attention span. उनका attention span is very limited. अब आप देखेंगे जब ये मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी, फिर आपको पता चलेगा कि अब इन लोगों से कम्युनिकेट करना कितना चैलेंजिंग होगा। And of course, with lot of technology, they neglect, you can say, interpersonal relationship, because if they multitasking in, and वो भी interpersonal relationship face to face वाली, online they're very good at it. Social media में देखें, they will have a lot of friends and they're good in, you know, having
they'll be participating in all discussion forums, they will be raising their voice in any social issues, and plus they like to they love to use Snapchat and Instagram, sharing non-stop and generating content. उन लोगों में आप देखेंगे कि basically they arrive with tablet and with the smartphone in their arms, so you can say that उनका जो communication is very fast. They might be using shortcut messages, छोटे छोटे messages को message करना, emojis के जरिए, things like that. So now you see, whatever generation we are communicating. We are communicating with the baby boomers. We are communicating with Gen X. We are communicating with the Gen Y, हम लोगों की generation, and Gen Z and Alpha generation. जब आप उनकी characteristic जानते हैं, now let us talk about the common tenets, या common features which is binding all of us together in that particular ethical role, कि किस तरह कौन से etiquettes हमें follow करना है. तो जनरल एटिकेट्स पहले हम देखते हैं, एंड यू मोस्ट ऑफ द एटिकेट्स एंड पॉजिटिव आपको यू आर वेरी क्वाइट फेमिलियर विद. व्हेन इट कम्स टू यूजिंग टेक्नोलॉजी, सबसे पहले इट इज अ नो व्हेन स्पेशली व्हेन यू आर ड्राइविंग, बिकॉज फॉर सेफ्टी रीजंस. बट नॉनदलेस आप वही जेन जी जनरेशन देखेंगे या मोस्ट जेन वाई भी, अगर वो दे आर नॉट यूजिंग द मोबाइल फोन्स, दे यू हैव द हेडफोन्स ऑन, राइट, एंड दे आर कनेक्टेड and when they're driving, and this is some of the etiquettes. It's only ये यहाँ पर तो सिर्फ safety की बात हो रही है कि for safety purposes don't use phone even during the traffic light. आप देखेंगे the moment 1 minute भी होगा, you will just grab the phone and you will start checking your messages, right? And sometimes जाहिर सी बात है, जब आप messages check करें तो you get caught up in that because it's such an addiction, you can say, because you instantly आपको लगता है कि मुझे जवाब देना है, या कुछ ऐसे खतरनाक मैसेज आए हैं कि it upsets you and you're driving and somebody is honking behind you and that will get converted into a road rage. यही होता है. तो इसलिए etiquette जब टेक्नोलॉजी का आता है, it's a no when you're driving, and especially even when you're standing in a line. अक्सर होता है कि क्यू में हम कहीं पर भी खड़े हुए हैं, तो standing with a mobile phone and going through your mails or going through your messages, or even कोई लोग तो अपना पूरा सीरियल भी देख रहे हैं, उसमें मूवीज भी देख रहे हैं, तो बेसिकली you're distracted. और जहां डिस्ट्रैक्शन होगा वहां पर मुमकिन ही नहीं हो सकता कि आप अपने जो मौजूदा जो ऑब्जेक्टिव, जिस काम से आप आए, वो आप पूरा कर पाए, एंड दैट क्रिएट्स इरिटेशन. अब आप बताइए, आप लाइन में खड़े हुए, यू हैव द फोन एंड यू गोइंग थ्रू द मैसेजेस, एंड वहां पर कैशियर है, नाउ ही इज स्टेयरिंग एट यू, क्या भाई आप आगे आइए, तो फिर आपको अटेंड करें. पीछे से लोग आपको कह रहे हैं कि भाई जाइए आप आगे. अब आप जब आगे जा रहे हैं, नाउ द कैशियर इज ऑलरेडी अपसेट. इवन व्हेन यू से गुड मॉर्निंग, probably they won't respond to you because you have already wasted their few seconds by looking at the mobile phone. So you see, distraction is a very important thing, because distraction jahan par hoga, if it's with the gadgets and it's with any kind, so your ongoing jo hone wala hai communication, uspe impediment hoga, usme barrier hoga, and it won't start on a good foot, right? And of course, when it comes to a class, it's very rude to take your phones out during the class, and unless and until, of course, if कुछ इस तरह का आप असाइनमेंट दे रहे हैं या कुछ इस तरह की बात है कि जिसमें बच्चों को दे हैव टू सर्च ऑन द वेब, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. तो ये भी बच्चों को बताना कि जस्ट, अक्सर होता है ना, बच्चे कुछ नहीं हुआ तो अपने हम लोग जो हायर एजुकेशन में है, स्कूल्स में तो हम नहीं देखते बिकॉज इट्स नो इन द स्कूल, बट इन हायर एजुकेशन बच्चे मोबाइल उठाकर अपने सबसे पहले टेबल पर रखते हैं, राइट? उसी से वो अपना टाइम भी देख रहे हैं, बार बार फ्लिप करके दे लुकिंग एट द टाइम एंड इट्स इन द फ्रंट. So this is a rude gesture. You're not supposed to keep the phone on the table, and especially when it comes to any kind of religious services. आपको पता है, जब नमाज पढ़ने जाते हैं या किसी के फ्यूनरल में जा रहे हैं, किसी को इयादत के लिए भी अगर हम जा रहे हैं, किसी somebody is sick, मतलब these are the courtesy. जब हम इस तरह के सोशल गैदरिंग्स में हम जा रहे हैं, तो उस वक्त क्या मतलब, देयर इज नो लॉजिक कि आप अपना फोन एक तो टेबल पर उठाकर रखें या टेबल्स पर, बिकॉज यूल बी टेम्प्टेड. जब बाहर रहेगा तो यूल बी टेम्प्टेड टू लुक इनटू इट, राइट? तो उमूमन हम कहते हैं कि कीप इट ऑन द वाइब्रेशन, स्पेशली व्हेन यू आर विद अ क्लाइंट, व्हेन यू आर विद अ कस्टमर, व्हेन यू आर विद योर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, या पेरेंट्स आपसे मिलने आ रहे हैं या आपसे बात करने, या स्टूडेंट आपके पास आ रहे हैं. तो एट दैट टाइम you have to put that gadget away. That's an etiquette, because you have to engage face to face. उस वक्त किसी भी तरह का distraction नहीं होना है. Especially with having food also, कितने researches हो गए, हम कहते हैं कि बच्चों को टीवी के सामने नहीं खाना खिलाना है.
और अब तो ये हो गया है कि बच्चों को तो दिया जाता है मोबाइल फोन एंड फिर निवाले दिए जाते हैं। अब कहते हैं बच्चों की आदत हो गई, ऐसे तो खाएंगे नहीं। तो इवन हैविंग फूड एंड इवन एट डिनर पार्टीज, अब आप खुद सोचिए, डिनर पार्टी में ठीक है आप मोबाइल निकाल रहे हैं फोटो लेने के लिए, एंड जेन जी जनरेशन, आप ज्यादातर आप देखिएगा उनके मुस्तकिल हाथ में रहता है स्नैपिंग स्नैपिंग फोटोग्राफ पूरा मुस्तकिल। हाउ आर यू सपोज टू इंटरैक्ट विद योर गेस्ट अगर आप मुस्तकिल आप अपने, बिकॉज यू थिंक अरे बोर हो रहे हैं चलो मोबाइल निकालें, मैसेज देखना शुरू करें, या लेट्स वॉच सम रील्स, लेट्स वॉच सम वीडियो। दिस इज रूड। यू आर इन अ सोशल गैदरिंग, यू आर हियर टू इंटरैक्ट, you're here to socialize. Socialization on phone can be later on also, you can hold on to that, मगर लोगों से मिलना बातचीत करना, and even उसमें भी कितने etiquettes होते हैं, you're approaching them, आप सलाम कर रहे हैं, how you're ending them, even social gathering में वो etiquettes हम नहीं जान रहे हैं कि अगर अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक्स पर्सन से मिल रही हूँ, आई एम टॉकिंग टू द पर्सन, एकदम से मुझे वाई नजर आ गया और ऐसे हाय अस्सलाम वालेकुम एंड मैं सीधे वाई के पास चले गई विदाउट एंडिंग माई कॉन्वर्सेशन विद एक्स। मतलब इतने हाइपर इंसान हो जाता है या इतने ओवर एक्साइटेड हम हो जाते हैं कि हम हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू एंड योर कॉन्वर्सेशन वी डोंट नो, वी कैन नॉट इवन ड्रॉ अ फाइन लाइन बिटवीन इट। सो दिस ऑल कम्स क्योंकि जब आप टेक्नोलॉजी, इफ देयर इज अ डिस्ट्रैक्शन इट कम्स अलोंग विद इट, स्पेशली व्हेन सेल फोन्स मीटिंग्स में अगर होते हैं कितना बुरा लगता है, चाहे वो वाइब्रेटर में भी हो, वो बज बज करता है क्योंकि आपने टेबल पर रखा है, हार्ड सरफेस पर रखा है, इट विल स्टार्ट बजिंग। So it's better that you leave it behind or silence, खासतौर से जब इस तरह के issues हो गए, and especially when you're having personal conversation with somebody, it's so important। जब बच्चा आपके खुद के बच्चे जब आते हैं, they like mama I want to talk to you, या this is something serious that I have to talk about, come on, personal conversation हो रहा है यहाँ पर, no need to take out your phones, keep it aside and don't even look at it, because when you're talking to somebody you should have face-to-face interaction with them. So as a general rule, try to avoid frequently checking your phone. It is not good. Come on, you cannot be that busy कि आप हर वक्त आप चेक कर रहे हैं एक, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब आप नोटिफिकेशंस ऑफ कर देंगे तो वो भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जरा सा बज होता है, जरा सा एक नोटिफिकेशन आता है, इंस्टेंटिवली क्यूरियोसिटी तो होती है कि किसका मैसेज आ गया, क्या है, क्या बात है, यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। सो यू हैव टू एलिमिनेट दैट डिस्ट्रैक्शन and fix some specific time, especially when you're working, how you're supposed to use the gadgets. Etiquettes come along with it, and especially in your personal life, in your अपने घर में है तब आपको कैसे यूज करना है, राइट? अब आते हैं हम जब सोशल मीडिया, दैट्स अनदर डिफरेंट मीडिया जिसमें हमें एटिकेट्स की बात करनी है। तो होता क्या है कि सोशल मीडिया ज्यादातर हमारे डिस्प्यूट्स, हमारे कॉन्वर्सेशंस, हमारे इनेट फीलिंग्स, सबलिमिनल मैसेजेस को पोर्ट्रे करने के लिए बहुत उम्दा चीज है। लड़ाई आपकी एक्स से हुई है, नाउ यू वोंट बी टॉकिंग टू दैट पर्सन and you won't be able to you won't resolve your issue with person X, but you will be portraying it to the rest of the world what happened with Mr. X, है ना? आप स्टेटस लगा देंगे, आप इस तरह की इमोजी लगा देंगे ताकि उसको पता चल जाए कि दिस मैसेज इज मेंट फॉर यू, राइट? दिस इज नॉट द सोशल मीडिया, इट डजंट कम इन योर एटिकेट्स, इट डजंट कम इन योर एटिकेट कि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, और खासतौर से आपकी ज्यादा से ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन जितनी आप सोशल मीडिया में करेंगे तो यू हैव ऑलरेडी रिजॉल्व दैट एटिकेट लाइन, देयर इज नो लाइन। अब जब लाइन ही नहीं है, एनीबडी कैन मिसयूज दैट इंफॉर्मेशन फॉर एनी पर्पस, तो फिर यू हैव नो राइट टू देन कंप्लेन कि उन्होंने कैसे बताया ये चीजें एंड हाउ दे डिडंट नो अबाउट माय रूटीन। भाई जब आपने घर से बाहर निकलने से लेकर रात में सोने तक का एक एक का स्केड्यूल आपने सोशल मीडिया और फेसबुक पर आप पोस्ट कर रहे हैं, तो उनको सब आपका रूटीन का पता है। उनको ये भी पता है कि 9 बजे आप किस वक्त आप बाहर जाते हैं या किस वक्त आपके घर में ताले लगते हैं, बिकॉज एवरी टाइम यू गोइंग आउट, एंड जाहिर सी बात आपको तो पता है जेन ज़ी वाला जनरेशन हर एक्शन में दे वांट टू टेक द पिक्चर एंड पोस्ट इट, right? And especially when you're posting the pictures of your friends, of your acquaintance, so you have to make sure that take the permission. अगर आपको लग रहा है उस तस्वीर में दे आर नॉट वेरी फ्लैटरिंग और वो ऐसी तस्वीर है कि वो खुद नहीं पसंद करेंगे कि वो मीडिया में डालने के लिए, सो व्हाई आर यू पुटिंग इट ऑन द मीडिया? जस्ट बिकॉज यू आर लुकिंग गुड इन दैट पिक्चर डजंट सफाइस योर जस्टिफिकेशन। तो ये भी हमें सब देखना है, ये टिकट्स में आते हैं सोशल मीडिया में कि जब आप फोटोग्राफ्स भी डालें, मेक इट कंफर्टेबल, बिकॉज कई फीमेल्स होती हैं दे डोंट वांट टू पोर्ट्रे द फोटोग्राफ्स ऑन द सोशल मीडिया,
for many reason. So अगर नहीं है तो आप you have no right कि आपने कभी भी उनके साथ कभी फोटो ले लिया and then you post it and then they receive comments regarding it. So you have to make sure regarding that. Avoid being overreactive also, because बता होता क्या है कि जब हम मीडिया से कोई बात कम्युनिकेट कर रहे हैं मीडिया के थ्रू, नाउ दैट इज वेयर द मीडियम कम्स, सेंडर, मीडियम एंड रिसीवर। जब मीडिया के थ्रू कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उमूमन वो मिस इंटरप्रेट किया जाता है, बिकॉज योर इमोशंस माइट नॉट बी शोकेसिंग वेल ऑन द सोशल मीडिया। तो उससे क्या होता है, आपने जैसे ही पढ़ा फॉरन यू फील दैट एन इनर अर्ज कि आप उसको रिएक्ट करें, फौरन उसका जवाब दें, या मे बी उसके जवाब में कुछ और पोस्ट करो। So it's a never ending cycle. You will be engaged. This will be a total distraction for you. So you have to make sure that you don't overreact over the post. जो चीज है बेस्ट ये है कि जिसने पोस्ट किया उससे वन टू वन बात करें, कंसल्ट करें, एंड यू टॉक टू देम इंस्टेड ऑफ आप खुद assumption, you assume and then you find your own inference regarding that particular post and you overreact. तो उससे ज्यादा आप देखेंगे दिलों में जो रंजिशें होती हैं, it kind of boils down to all that, and this is not correct. And of course try to avoid posting any offensive thing because you are representing yourself well. And अक्सर ये होता है कि अगर आपको कोई टीचर का के बारे में मालूम करना है तो आप, या आपको किसी रिसोर्स पर्सन के बारे में मालूम करना है और यू वांट टू रिक्रूट समबडी, कोई जॉब के लिए आपको रिक्रूट करना है, तो सबसे पहले बेस्ट क्या है, सोशल मीडिया में जाते हैं कि वो उस इंसान ने सोशल मीडिया में अपने आप को कैसे पोर्ट्रे किया है एंड किन किन चीजों में एंगेज्ड है। इज ही एंगेज इन सम काइंड ऑफ ऑफेंसिव थिंग्स, इज ही एंगेज बिकॉज उसका जो कम्युनिकेशन उसके जो डिस्कशन फोरम में है या जो ब्लॉग्स में, उससे झलक कर पता चलेगा कि वो इंसान किस तरह कम्युनिकेट कर रहा है। तो उस चीज को भी बहुत ध्यान से रखना है। एंड एक और चीज मैं आपको बताऊं कि जब सोशल मीडिया में एक जो कॉमन अब देखिए वही होता है ना, कल्चर एंड वैल्यूज कैसे बदल रहे हैं कि अब आजकल में जब जब कोई इंसान का इंतकाल होता है, कंडोलेंस आपको करना है, उसमें भी जब कंडोलेंस मैसेज है, जब उस इंसान को करना है आपको कंडोलेंस, सो पिक द फोन अप एंड कॉल। You want to wish somebody that close, pick the phone up and wish them the birthday. Because your words will express more than what you write. And अब तो कॉपी पेस्ट आपको पता सब होता है। कंडोलेंसेस में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन आपने इधर से उठाया उधर पेस्ट करते हैं, मल्टीपल आपने करते, तो वो एसेंस कहाँ गया है, वो इमोशंस कहाँ गए, कॉपी पेस्ट। एंड इवन द पर्सन हु इज वो जो मैसेज जो कन्वे कर रहा है कि किसी की डेथ हो गई एंड देन दे पुट इन डिफरेंट इमोजीज ऑफ क्राइंग एंड एवरीथिंग, इट्स अंडरस्टूड, यू डोंट हैव टू शो विद इन इमोजीज दैट यू फीलिंग बैड। तो कुछ चीज ऐसी होती है सोशल मीडिया में कि नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टेंसेस आर, यू हैव टू मेक श्योर दैट कहीं कहीं आपको रिटन कम्युनिकेशन नहीं करना होगा, you have to pick the phone and communicate, right? Now coming to, this was regarding the technology. Now what are the basic etiquettes to follow? The first etiquette that we have to follow is we have to listen to the person you're communicating with. That shows your first etiquette. You are कितना आप ease out कर रहे हैं अपना communication, है ना? You're sounding, you're not overlooking the other person. You are making yourself available, courteous है आपका। एंड सबसे आज के जमाने में हम बच्चों को भी जो ताकीद करते हैं उनके लिए कर्टियस क्या होता है कि वो अपने, अगर अम्मा आ गए या टीचर आ गई तो अपने हेडफोन्स निकाल देते हैं। दिस इज देम शोइंग रिस्पेक्ट दैट यस वी आर लिसनिंग टू यू, राइट? दिस इज द रिस्पेक्ट द शोइंग। या अब के जमाने में दे पुट द फोन अवे, जब फोन देख रहे हैं तो फोन को हटा दिया, इसका मतलब है कि हम आपको सुन रहे हैं, राइट? No doubt, that is very important. Other than that, maintaining eye contact is another thing. And पैराफ्रेजिंग, जब इंसान जब बोल रहा है उसको दोबारा रिपीट करना, समझने की कोशिश करना, जो नहीं समझ पा रहे हैं, पुटिंग अप द क्वेश्चन, दिस एक्चुअली शोज दैट यू आर इंटरेस्टेड इन दैट कम्युनिकेशन एंड जस्ट नॉट सेइंग हाँ हाँ करके आपने खत्म कर दिया। अक्सर होता है बच्चे आके बोल रहे हैं कुछ, आपने कहा करके जस्ट नॉट यू डोंट हैव टू यूज दोस फिलर्स आल्सो, यूज प्रॉपर सेंटेंस। यस आई अंडरस्टैंड, आप चाहते हैं कि आपका सेशनल पोस्टपोन हो, इट विल बी डन, बस ये जुमले में आपने कह दिया, now it has been communicated. Then also thinking about your tone is very important, right? Because whatever because it expresses not only your the words that you're saying, your interest, your the variation in the person's voice,
what you want to emphasize, what is you want to express urgency, या जिसमें आपको you want to be very slow, या जिसमें आपको थोड़ा आपको relax अंदाज में भी बोलना है, वो सब आपकी इंटोनेशन आपके टोन से रिफ्लेक्ट करेगा. And if obviously nobody likes a monotonous speech. आपको पता है आपके बच्चे भी आपके स्टूडेंट्स भी, अगर आप मोनोटोनस स्पीच या मोनोटोनस टोन होगा तो एक टाइम होगा वैसे ही आपको बताया कि उनका अटेंशन स्पैन कितना कम है. और अगर आपने मोनोटोनस स्पीच आपने कर दी या मोनोटोनस आपका लेक्चर हो गया, इट्स अ किलर. मतलब वो तो पूरा आपका मोटिवेशन और डिसिप्लिन को खत्म करके रख देगा आपकी क्लास को. तो यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ इंटोनेशन एंड दैट काइंड ऑफ you have to mind that tone. Then use empathy and think about others before you speak. जाहिर सी बात है जब जिस किससे आप बात कर रहे हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड. अगर उनके अंदर कुछ फ्रस्ट्रेशन है, कुछ स्ट्रेस है, सबसे पहले आप जब भी बात ऐसे कभी भी इस तरह कॉन्फ्लिक्टिंग बात हो, डोंट टेक एवरीथिंग पर्सनली. क्योंकि वो जो सामने वाला इंसान है उसके कोई भी ग्रजेस होंगे, कुछ फ्रस्ट्रेशन होंगे, वो उसके टोन में भी आ रहा है, उसके जेस्चर्स में भी आ रहा है. तो आप क्यों, that should not be reflected in it. You should keep your voice calm and cool and respond accordingly. आपको अपना courteous communication maintain करना. This shows that you are maintaining that empathy level. आपका EI, आपका emotional intelligence कहाँ है, that shows. You know, you don't have to lash out angrily. या कोई अक्सर होता है बच्चे आपको and एक और चीज इसमें मैं आपको कहूँ कि as a teacher हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इमोशनल लेबर. Emotional labor is how we are, being so laborious enough, or how we are working hard to keep our emotions intact. इसलिए देखिए इमोशनल लेबर जो ये फील्ड है, इट्स अ वेरी बर्निंग फील्ड. काफी रिसर्च हो रहा है. ज्यादातर उनको किस में ट्रेन करा जाता है, आपको पता है कॉल सेंटर्स में जो जो फोन पर बात करते हैं उनको इमोशनल लेबर में ट्रेन किया जाता है. कितने भी एग्रेसिव कस्टमर हो, आप देखिएगा उनकी आवाज, उनके टोन से इनको पता चल जाएगा, चाहे उनका चेहरा कितना लाल हो रहा होगा, मगर टोन से दे बी वेरी कामली एड्रेसिंग टू योर नीड. है ना, एयर हॉस्टेस को देखिएगा वो लोग कैसे एड्रेस करते हैं. दिस इज ऑल इमोशनल लेबर. तो एज अ टीचर हमें भी करना है ये. वी हैव टू कंट्रोल. कितने मुख्तलिफ बच्चे होते हैं. Parents, some of them parents are so difficult. Even sometimes your bosses could be difficult, your colleagues could be difficult. But how are you keeping that yourself so composed, so intact? And when they're approaching you, you're not lashing out, but that is the assertive communication that you're having. Then another thing is that don't be afraid to use phone. This is what I was just telling a while back. जहां पर आप मैसेज के जरिए नहीं कम्युनिकेट कर सकते, एंड बहुत से इंस्टेंसेस हमारी लाइफ में होते हैं ना, हम ईमेल या सोशल मीडिया या एसएमएस के थ्रू अगर नहीं, खासतौर से डिफिकल्ट मैसेजेस होते हैं, तो बेहतर होगा कि जस्ट इट विल सेव योर टाइम, इट विल सेव योर एनर्जी. पिक द फोन अप एंड यू टॉक टू द पर्सन दैट यू चूज टू टॉक. तो उससे क्या होगा कि कई चीजें जो हम, बिकॉज अगर आप रिटन कम्युनिकेशन मैसेजेस में आप ओवर रिलाई करेंगे, योर पर्पस, योर अर्जेंसी, योर इंटेंशन माइट नॉट बी क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन दैट टेक्स्ट मैसेजेस. इसलिए आप देखिएगा कई मैसेज जब हम स्टूडेंट्स को करते हैं, इट इज मिस इंटरप्रेटेड. एंड वही चीज आप क्लास में अनाउंस करें या फोन करके उनको अनाउंस करें, उसकी बात अलग होगी, बिकॉज दैट विल बी मोर इम्पैक्टफुल. Now, some of the tips for making conversation using good manners, these are some, बोलते हैं ना वो golden words. हमेशा हमें अपने conversation में ये रखना है, चाहे आप लिखें, चाहे हम बोलें. It could be please, thank you, and when someone says thank you, you have to say you're welcome in response, right? And of course, like I said, don't use fillers. हाँ, yeah, ना, इस तरह के अक्सर लोग लिखने में टेक्स्ट में भी ये यूज करते हैं. सो दिस इज नॉट गुड. आई मीन इट डजंट कम इन गुड मैनर्स. कि इवन एज अ टीचर इफ अ स्टूडेंट इज आस्किंग मैम सेशन पोस्टपोन्ड हो गया एंड यू आर राइटिंग या इट इज पोस्टपोन्ड, दिस इज नॉट द वे टू. बिकॉज व्हेन यू आर सेटिंग द एग्जांपल, आपको बाकायदा पूरा जुमला लिखना है, राइट? एंड कीपिंग योर टोन प्लेजेंट एंड टेक केयर ऑफ फ्रेंडली पुट डाउन्स ऑल्सो. अक्सर जब हम ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं ना अपने दोस्तों से एंड एवरीथिंग, सो वी यूज वर्ड्स लाइक शट अप एंड सो व्हाट या व्हाटएवर. इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, नॉट स्पेशली इन पब्लिक सेटिंग. जब आपको बताएं आप कॉरिडोर में खड़े हुए, योर स्टूडेंट्स आर लिसनिंग एंड योर कॉल, एंड आप अपने फ्रेंड को, क्लोज फ्रेंड होगी,
and you're saying, oh, shut up, you know, things like that. Or sorry to use the word, but then we do that. And there is a very common word जो हमारे बच्चे use करते हैं. I have to use it because I have to explain that word is shit. छोटे छोटे बच्चे, मायने नहीं पता होंगे उनके, सिचुएशन पता होगी कि किस सिचुएशन में दे हैव टू यूज दैट वर्ड, एंड दे फाइंड इट वेरी फ्रेंडली. हम लोगों के सामने यूज करते हैं, टीचर के सामने यूज कर रहे हैं, पेरेंट्स के सामने यूज कर रहे हैं. तो ये सब चीजें हैं कि हमें बताना कि विच आर द वर्ड्स दे आर नो, दे आर नॉट वेलकम एंड दे आर नॉट सपोज टू बी स्पोकन, राइट? एंड sometimes it so happens that when you're conversing, when you're communicating, sometimes you have to break the ice. कभी बहुत awkward silence हो जाता है, तो उस awkward silence को आप किस तरह किसी question के through you try to ease out. तो ये एक बहुत अच्छा, एक गुड कम्युनिकेटर का स्टाइल होता है कि जब इस तरह की सिचुएशन आए, या अगर 3 लोग बात कर रहे हैं, 2 के बीच में थोड़ा हीटेड हुआ, तो हाउ आर यू सपोज टू ब्रेक दैट आइस इन ऑर्डर टू डिफ्यूज इट, so ask an appropriate question that comes along with it. And then even when you're communicating, avoid talking or telling too long stories या details में, या बहुत information आपने, ये भी अच्छी चीज नहीं है. कभी ऐसा होता है कि बाकायदा आपको दूसरे इंसान को रोकना पड़ता है, तो ये अच्छी बात नहीं है ना कि आप इतने डिटेल में सब चीजें बताएं. Because communication means you know when to stop so that other person can pick up and ask you the question or can continue from there on, right? So you have to, because it's a cycle. तो जब आप फीडबैक आप प्रॉपर देंगे तभी तो दूसरा इंसान देगा. तो उसके लिए वक्त पर खत्म करना, वक्त पर टाइम पर उनको अलाउ करना बहुत जरूरी है. Then of course using cell phone in public, कितनी खराब आदत होती है. कभी लोग कहीं पर भी होते, the moment फोन आता है स्पीक फोन पर कर देते हैं या बहुत तेज बात करते हैं. Sometimes public place is not the place where you can put on speaker or when you can keep your voice. You have to keep your voice low. नहीं बात कर सकते, सेक्लूड होके बात करिएगा. अक्सर टीचर्स क्लास में भी स्पीक फोन पर हो जाते हैं. जाहिर सी बात, आपके घर से कॉल आया, किसी आपकी बेटी या बच्चे का कॉल आया, या आपके बॉस का कॉल आया, ही माइट बी शाउटिंग एट यू. अच्छा नहीं लगता है. यू नेवर नो कि दूसरे इंसान का क्या इंटेंशन है, कैसे बात कर रहे हैं. तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी आवाज पब्लिक प्लेस में भी, आप देखेंगे लोग अगर जितना शोर होता है उतनी तेज आवाज में वो फोन पर बात कर रहे हैं, तो वो भी दिस इज नॉट वेलकम एंड डज नॉट इंक्लूड इन द एटिकेट ऑल्सो. एंड स्पेशली व्हेन हम जब वॉइस मेल देते हैं, वॉइस मेल, आई नो मोर जनरेशन Z इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन वॉइस मेल्स. तो उन लोगों के लिए तो बेस्ट होता है कि वो टेक्स्ट मैसेज करें ना, थोड़े इमोजीज एंड थोड़े छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म्स यूज करने के लिए. मगर जब आप वॉइस मेल कर रहे हैं तो वॉइस मेल में भी एटिकेट होता है कि whenever you speak, पहले आप अपना नाम बताइए, who are you calling for and why you're calling for. ये तीनों चीजें आपको वॉइस मेल में एड्रेस करना जरूरी है. बिकॉज दैट पर्सन हो सकता है वो नंबर नहीं हो उसके पास, तो दे माइट नॉट नो हु यू आर. तो आप अपना नाम बताएंगे, द पर्पस एंड व्हाई यू आर कॉलिंग, एंड ऑफ कोर्स किससे आपको बात करनी. And if you're a good listener, you have to, of course, show that affirmation by nodding your head, maintaining eye contact, and comment on what the other person has said. तो इससे क्या होगा कि एक तरतीब से एक चीजें रो में रहेगी, एक साइकिल मेंटेन होगी. And never interrupt the person while they are talking. आजकल के बच्चों में ये बहुत मेजर फ्लॉ भी आप कह सकते हैं कि अगर आप कुछ चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं या उनके डाउट्स क्लैरिफाई करें, एक डाउट क्लैरिफाई नहीं होता है कि वो बच्चा दोबारा से कुछ और पूछने लगता है. इवन ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन देन यू हैव टू स्टॉप द चाइल्ड कि बेटा देखो 2 बड़े लोग बात कर रहे हैं, अभी जस्ट वेट फॉर योर टर्न. सो दिस इज वेयर वी हैव टू टीच देम कि डू नॉट इंटरप्ट व्हेन समवन एल्स इज टॉकिंग, लेट देम फिनिश. और समवन एल्स के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि आप अपना टाइम मैनेज करिए. अगर जाहिर से बात, आप इतना लंबा सवाल, इतना लंबा आप अपनी कहानी बताएंगे तो कहीं ना कहीं किसी को तो रोकना होगा. तो अगर कोई रोकेगा तो जाहिर से बात है वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा ना. इट वोंट बी इंटरप्रेटेड एज एन एटिकेट थिंग. And then depending on whatever generation you're communicating with, whether it is text or through mailing, you have to make sure that your text or your voice is respectful enough. मतलब it is not disrespecting the other person. ना वो इंटरप्रेट हो रही है डिसरेस्पेक्टफुल. तो ये चीज बहुत जरूरी है कि आप किस अंदाज में आप लिख रहे हैं या किस अंदाज में आप बोल रहे हैं. उससे आपकी आवाज की वॉल्यूम से भी अंदाज होता है कि your aggression can be in your volume as well.
And don't answer your phones when you're meeting with others, especially when you're in meeting. I've already established that. And never place it on the table. उससे क्या होता है, एक सिग्नल ये भी पता चलती है कि दैट आप किसी के फोन का इंतजार कर रहे हैं, और बार बार अगर हो सकता है आप टाइम भी देख रहे हैं, तो दूसरे इंसान को ये लग रहा होगा कि दैट पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन माई टॉक. वो चाह रहा है कि मैं जल्दी से ये बात खत्म करूं, एंड ही वांट्स टू गो ऑन विथ हिज मोबाइल फोन. एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. जो नेक्स्ट पॉइंट है, अक्सर लोग क्या करते हैं, जैसे फोन अटेंड करना है फौरन स्पीकर पर डाल देते हैं, स्पीकर फोन पर. और यू हैव टू मेक श्योर कि जो दूसरा इंसान है उसको पता चले कि उसका जो फोन है वो स्पीकर फोन पर है, तो उसको भी पता होगा कि मुझे क्या बात करनी है. तो अगर आपकी आदत है स्पीकर फोन पर डालने के लिए, तो ठीक है, हमें पता है कि आप डालेंगे. मगर जब नहीं है, एंड इफ यू आप कज़दन आप किसी को स्पीकर फोन पर डाल रहे हैं, तो यू हैव टू टेल द अदर पर्सन दैट यू आर ऑन स्पीकर फोन. तो उस तरह वो भी अपने थोड़े पता होगा कि उसको क्या बात कहनी है, बिकॉज अदर्स माइट ऑल्सो बी लिसनिंग. एंड वाइल कम्युनिकेशन, खासतौर से टीचर्स का भी, आप प्रोफेशनल अपना ईमेल आईडी यूज करा करिए. कहीं पर भी हो, इंस्टीट्यूशनल आईडी हो, उससे सबसे पहले आपका जो प्रोफेशनलिज्म है वो आपके आईडी से झलकता है कि यू आर a part of this community, of this educational institution, and you're using that particular email ID. And don't use so many exclamation mark. हम सोचते हैं खूब सारे exclamation mark से हमारा email या हमारा text message बहुत अच्छा होता है, but it is not considered respectful enough कि आप ज़्यादा उसमें exclamation use करें. And अक्सर आप देखेंगे कि जब reply all, जब आपके पास कोई मैसेज आता है जिसमें मल्टीपल आपके जो ईमेल आईडीज हैं, बट यू हैव टू ओनली ईमेल टू द पर्सन हु हैज ईमेल्ड यू, एक इंसान को जवाब देना है, तो यू हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर हिटिंग रिप्लाई ऑल. बिकॉज अक्सर ये होता है कि रिप्लाई ऑल से जिन जिन को उन्होंने मेल किया है उनके पास भी वो मेल पहुंच जाता है और आपको पता नहीं चलता है. तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है. एंड बी कॉशियस विथ ह्यूमर, क्योंकि मजाकिया टोन या मजाक ऐसे बोलना वो अलग बात होती है, और लिख कर बोलना और उसके ऐसे इंटरप्रेट हो रहा है वो बहुत डिफरेंट है. इट कम्स अक्रॉस वेरी डिफरेंटली व्हेन इट इज रिटन. तो इसलिए रिटन टेक्स्ट में काफी डाउट होती है, काफी ऑफेंसिव भी हो सकता है आपका मजाक, because the words that you're using. So you have to make sure that you are not using too much humor in your emails or in your text. Then you should know the person whom you're contacting. कोई anonymous mail पर, कोई anonymous message को, आपको message को जवाब देना बहुत सोच समझ कर आपको, because basically you're also building bonds, that interpersonal positive bonds. So you should know the person whom you're contacting with. And ये चीज हम बच्चों को भी सिखाते हैं कि जब भी आप gadgets use करें, make sure that you know the person you're contacting with, and keep the conversation short. घंटों घंटों फोन पर करना, किसी को engage करना, it's not appropriate. And never give bad news via SMS. वही चीज मैंने कही ना कि कुछ चीज ऐसे मौके होते हैं जब आपको you have to pick the phone up and you have to give them the bad messages and everything. And be careful with abbreviation or acronym और इनिशियलिज्म, ये सब चीजें इंटरचेंजेबली है कि हम अक्सर जो शॉर्ट फॉर्म जैसे यू लिखते हैं, BTW बाय द वे, है ना, इस तरह यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अगर आप एब्रिविएशन यूज कर रहे हैं किसके लिए आप इस्तेमाल करें. आर यू राइटिंग टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यूजिंग एब्रिविएशन, और आर यू राइटिंग टू अ पेरेंट, डिपेंडिंग कि आप किसको लिख रहे हैं, कैसे एक्रोनिम आप यूज कर रहे हैं. एंड नेवर चेंज मीटिंग्स और वेन्यू वाया टेक्स्ट. अक्सर ये होता है कि उस वक्त किसी ने टेक्स्ट देखा नहीं देखा है, बेस्ट होता है कि कभी भी इस तरह इंस्टेंटली अगर कुछ चेंज हो, कॉल एवरीबडी, inform them via call so that they are able to go to the कोई भी जो चेंज उनका वेन्यू हुआ या टेक्स्ट हुआ, क्योंकि अक्सर ये देखा कि दिस ऑल्सो बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन. देन ऑफ कोर्स ऑनलाइन में या आपका रिकॉर्डिंग हो रही है, यू हैव टू लुक एट द कैमरा, डोंट जेस्चर टू मच, बिकॉज इट काइंड ऑफ beats the purpose that whatever you want to communicate, it's not communicating well. So that was all regarding the communication through the technology, through the social media and so on, effective communication. अब आते हैं कि कुछ communication के etiquettes, it will differ in the business scenario. So this is the extract from an article written by Sai 23. तो उन्होंने भी कहा है कि कुछ चीजें हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में. फॉर एग्जाम्पल यूजिंग इंक्लूसिव लैंग्वेज.
हम लोग वी करके बात करें, लेकिन ना हम नॉट मैं या आई वाला नहीं. ट्राई टू यूज द इंक्लूसिव लैंग्वेज इन ऑफिशियल मीटिंग. खासतौर से जब आपका टीम वर्क होता है, जब आपका कुछ कंबाइंड असाइनमेंट होता है. आई डिड इट, आई वाज द वन हु डिड दिस, और या आई टुक दिस स्टेप. इट डज नॉट साउंड गुड. यूज इंक्लूसिव लैंग्वेज. एंड उसके साथ जाहिर सी बात है एक्टिव लिसनिंग. जब आप कहते हैं, जब आप समझने की कोशिश करते हैं, then you paraphrase it. I understand. Let me see more. I see what you're saying, or let me have more clarification regarding this. So these are the some key phrases जिससे पता चलता है कि you're actively listening. And of course, when it comes to maintaining relationship, आपको पता है business में कितना important है. Same goes with teaching. हमारे लिए भी ये relationship maintain करना it's an important thing, because students और जो अच्छे communicators होते हैं, जो अच्छे relationship मेंट करके रखते हैं अपने teacher और students के बीच में, it remains throughout their life. A student will never forget the teacher if they have made that relationship with respect, and with that they communicate with them, how they communicated and how they listen to their problems also. फिर दूसरा आता है promptness. कितने prompt आप respond कर रहे हैं, ये भी professionalism की जो अलामत है. It reflects your reliability. Your head of the department will rely. उन्होंने मैसेज किया, आपने फौरन जवाब दिया. उस वक्त आपके पास जवाब नहीं है, एटलीस्ट यू हैव गिवन देम द रिप्लाई. आई हैव रिसीव्ड द मेल, यू एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ द मेल, एंड देन यू से दैट आई विल रिस्पॉन्ड सून. यही बहुत बड़ी बात है, योर प्रॉम्प्टनेस. ऐसे नहीं किसी ने मैसेज दिया, लोग तो सीन करके छोड़ देते हैं, पता ही नहीं है कि उन्होंने देखा है कि नहीं देखा. और हर कम्युनिकेशन का एक टाइम फ्रेम बहुत जरूरी है, and you have to maintain that particular time frame. And that time, within that time frame, you have to also show that respectful tone in both your internal and external communication. Internal communication क्या होता है? Internal communication इस तरह समझ लीजिएगा, जो आपके within the teaching community, जैसे आप अपने एक institution, एक department में हैं, how are you greeting each other, right? आप अपने colleagues को किस नाम से address कर रहे हैं, किस टाइटल से? आर यू एड्रेसिंग विद द नेम, आर यू एड्रेसिंग विद द सरनेम और विद द टाइटल? हाउ आर यू प्रैक्टिसिंग एक्टिव लिसनिंग? फीडबैक कैसे दे रहे हैं? आर यू यूजिंग दोस इंक्लूसिव टर्म्स इन योर वोकैबुलरी लाइक वी आर, बिकॉज दैट एक्चुअली फॉस्टर्स टीम वर्क. इसी तरह एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल में थोड़ा आपका दायरा बढ़ जाता है. यू आर एक्सटर्निंग आउटसाइड योर डिपार्टमेंट, इट कुड बी फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट, इट कुड बी ऑल द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स. उसमें कितना पोलाइट है, कितना प्रोफेशनल ग्रीटिंग है, एंड उसमें भी हाउ आर यू एड्रेसिंग देयर नेम. नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप किसी के नाम से आप कहें, जैसे मिसाल के तौर पर आयशा, शी कम्स अप टू मी, शी इज माय स्टूडेंट, एंड अगर उसने कुछ अपनी प्रॉब्लम बताई, एंड आई जस्ट से आई अंडरस्टैंड, and when I take her name first, I say, Aisha, I understand your problem. That actually reinforces her, that she knows that, first of all, she knows that like she is, her self identity is known to me, and she feels proud कि मैडम को मेरा नाम बताए, and उस नाम से उसको मोटिवेशन मिल रहा है, and that is actually starting that connection. So taking that name, इसलिए आप देखेंगे कि even जब आप किसी कॉलर को आप कॉल करें या कंप्लेन, अक्सर टोल फ्री नंबर पर आप कंप्लेन भी करते हैं अमेजोन ऑनलाइन पर, सो दे एड्रेस यू लाइक दे लाइक, एंड even they ask you, how should I address you? Are you Dr. Ahmed? Okay, Dr. Ahmed. Are you fine with me calling Dr. Ahmed? And you'll say yes. Then they will address you. That's how you start. Okay, I understand your concern. I understand your query. We'll look into this matter and this. So this shows your empathy level. This shows your promptness and your concern in that particular problem. The internal and external communication में दोनों चीजें important है. फिर आता है वक्त का, जो मैंने आपको कहा था ना, importance of time. Respecting others' time is so important, especially when you want to build, positive impression, trust, reliability. It's so crucial. चाहे वो business में हो, चाहे वो आपके teaching learning process में हो. Because जब time manage करेंगे, आप time दूसरे को देंगे, अपने आप को देंगे, and you meet those agendas on time, so definitely it becomes very important. आपको बताएं, आपकी जो टीचिंग फैकल्टी में हम लोग मीटिंग्स अटेंड करते हैं, मीटिंग्स का एजेंडा होता है, मीटिंग्स का टाइम होता है, सो वी हैव टू एडहर टू दैट टाइम. अगर हम टाइम को नहीं एडहर करेंगे तो हमारे कम्युनिकेशन इन दैट मीटिंग प्रोसेस, इट विल बी डिसएरेड, it will be a defective kind of a communication, because अगर कम वक्त रह गया तो हमें जल्दी जल्दी निपटाना है. अगर हमने टाइमली खत्म कर दिया, टाइमली नहीं खत्म किया, there lot of agendas are left, so definitely something will be left incomplete.
So we have to understand कि किस तरह एजेंडास को किस वक्त कंप्लीट करना है, एंड टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिलेज। हमें कितने सारे असाइनमेंट्स मिलते हैं जिसमें आपको डेडलाइंस होती हैं, एंड अकॉर्डिंग टू डेडलाइंस, बिकॉज आप डेडलाइंस के हिसाब से अचीव करेंगे, इट बिल्ड्स ट्रस्ट, it builds and strengthens relationship, and ultimately it will contribute to professional reputation. Now my next slide will be talking about email etiquettes. Very quickly I'll be going through. देखिए, सब्जेक्ट में ईमेल जब आप लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि जब सब्जेक्ट लिखते हैं तो जो उनको बोलना है, जो उनका जो बॉडी है, जो जिस टेक्स्ट मतलब जो ईमेल में बोलना है, वो पूरा सब्जेक्ट में लिखते हैं। सो दिस इज नॉट राइट। आई मीन यू हैव टू बी वेरी कंसाइज। आपके बिल्कुल 5 वर्ड्स, मिनिमम 5 वर्ड्स का सब्जेक्ट है। ऑलवेज यूज सैल्यूटेशन व्हिच इज कंफर्टेबल, मिस्टर, मिस, मिसेस, एंड उसके हिसाब से, एंड इवन व्हेन यू आर साइनिंग ऑफ, regards, with best regards, yeah, with yours faithfully, thanks and regards, you have to use this terminology. Fonts is important. अक्सर क्या होता है, लोग कैपिटल में लिखते हैं। You know, writing in capital meaning that you're shouting. It is basically that you are showing your anger. So, and of course, and writing in capital, it's hard to read. So we have to avoid writing any font in capital. You avoiding any acronym, जैसे मैंने अभी बताया ना, BTW, ASAP and things like that. And using many emoticons in your personal communication, because they have no place. खासतौर से जब प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में आते हैं, इमोटिकॉन्स को यूज करना नहीं है। एंड इसी तरह जो एटिकेट्स हमारे जो नेट पर होते हैं, वो आपके कैस्पर्स्काई ने बहुत उम्दा तरीके से वो रूल्स ऑफ कंडक्ट एंड रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन बताया है कि हाउ यू हैव टू स्टिक टू दोज रूल्स, है ना। थिंक ऑफ द पर्सन ऑनलाइन, बिकॉज यू आर प्रेजेंटिंग योर बेस्ट साइड ऑनलाइन, एंड बी वेरी केयरफुल विथ योर ग्रामर एंड पंक्चुएशन। इसके लिए तो मैं तो आपको हाईली ताकीद करूंगी, एक तो आपका जो ऑटो करेक्ट है उसको भी आप बहुत ध्यान से ऑटो करेक्ट करिए। कभी तो वो ऐसी चीज ऑटो करेक्ट कर देता है कि जो आप लिखना चाह रही हैं वो कुछ और से कुछ और हो जाता है ना। देन ऑफ कोर्स रिस्पेक्टिंग प्राइवेसी ऑफ अदर्स इज इम्पोर्टेंट, एंड डोंट अब्यूज योर पावर। अक्सर ये होता है ना कि जिन लोगों को गुड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है टेक्नोलॉजी का, तो फिर वो उस चीज को एक्सप्लॉइट करते हैं, दूसरों का ईमेल पढ़ना, दूसरों की मैसेजेस पढ़ना, ये सब चीजें है ना, या और भी इंफॉर्मेशन इधर से उधर करना, ये सब चीजें आता है। तो इवन इफ यू आर पावरफुल इनफ इन दिस पर्टिकुलर ICT, so you cannot abuse that particular power. And lastly comes the flame words. Flame words are supposed to be under control. Now, what are flame words? Flame words are basically messages that contain very aggressive personal criticism or attack on a person. ये अक्सर आपको नेट पर मिलते हैं, ब्लॉग्स में मिलते हैं, and profanity is also a part of this kind of a net etiquette. You don't have to be, you have to maintain that language. बहुत आपको insulting threats, ये सब चीजें avoid करना है जब आप ब्लॉग्स एंड डिस्कशन में हो। और अगर इंगेज कोई हो रहा है हेट स्पीच में या उस तरह, तो आपको देयर इज a provision in which you can report to the provider of the website and can complain, and within 24 hours that particular post will come down. So, and of course cumbersome आपको repetition and language नहीं रखना है। एंड बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम नेट एटिकेट्स बताएं कि बच्चे अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन नेट पर नहीं दें, न्यूट्रल निकनेम रखें, बच्चे भी अपनी आइडेंटिटी एकदम से नहीं बताएं नेट पर, खासतौर से जब ब्लॉग्स एंड फोरम्स एंड उसमें जब पार्टिसिपेट करें। एंड डू नॉट ट्रस्ट चैट पार्टिसिपेंट्स, बिकॉज आपको ये नहीं पता कि किससे आप चैट कर रहे हैं। And even for the children, keep it very short and clear. Don't ask them, because जितना वो लोग engage होंगे, उतना ही आप देखेंगे कि they will be, sharing their personal information. So you have to be very careful regarding this. फिर आखिर में हम आते हैं डिसेबिलिटी एटिकेट्स क्या होते हैं। आपको बताया कि हमारे जो बोलने का अंदाज है या लिखने का अंदाज है, उसमें डिसेबिलिटी, even that word disability, it is found offensive. We are supposed to use a very positive term या positive connotation, वो अल्फाज इस्तेमाल करना जरूरी है। For example, we use the best term is differently abled, है ना। तो इसमें हम जैसे words like handicapped, crippled, victim, उसको रिप्लेस करना है विद द मोस्ट पॉजिटिव एटीट्यूड। बर्थ डिफेक्ट भी नहीं करना है, कहना है, हम कह सकते हैं इट इज कॉज्ड बाय सो एंड सो, और इट वाज डिसेबल्ड सिंस बर्थ, or that person was born with this kind of a
with a person with this kind of a disability. So these are the, even for the disabled one or the differently abled individuals, there is a very soft tone, a very positive, affirmative tone that we can apply, especially when we are conversing with them, या हम जब लिख रहे हैं और या जब हम text messages कर रहे हैं, तो उसके लिए करना बहुत जरूरी है. So lastly, let's conclude. So what we have seen in my presentation is that how communication etiquettes, even if it's with your colleagues, students, administrators, parents, or in short, जितने भी stakeholders हैं, आप जब उनके साथ ये etiquettes follow करते हैं, so of course the first objective is that you want to build a strong relationship with that particular boundary, that is, respecting them. You're using inclusive language, active listening, communicating clearly and concisely, and your tone, your language, and how you're responding will ultimately prove very beneficial in successful collaboration and long-term relationship. And these are the references, agar if you want to read more, because मैंने जो भी slides से extract किया है, वो इन्हीं references के करा है, so you can have a good detailed read regarding this. So with this, I conclude, and I thank all of you for your patience listening. So now this room is open for your queries or for your comments. Excuse me. Anything you want to share? Excuse me. आपको कुछ शेयर करना? Now this is the part where you have to give your feedback. Remember, sender, now you were the receiver, this was the medium through which I communicated. Now you're supposed to set that communications. Now you have to give that feedback. और अगर आपको कुछ और शेयर करना है, कुछ etiquettes के बारे में अगर आपको कुछ शेयर करना है, तो please do share. Something that I might have missed out. Anybody? You're most welcome. चलिए आपने ये फीडबैक दिया, मगर अगर आप कुछ एटिकेट्स के बारे में कोई शेयर करना चाहे तो बेहतर होगा. हम लोग सब उस एक्सपीरियंस से भी शेयर करेंगे. Okay, so I guess I've already, the time is due. It was 1:15, है ना? तो फिर is Sajid sir present in the meeting room? I don't think so. Okay, dear participants, आप देखिए, इंशाल्लाह आप लोगों से कल भी मुलाकात रहेगी. So tomorrow I'll be interacting you with a different topic. उसमें हम लोग Google Forms के बारे में देखेंगे. आज के आफ्टरनून सेशन में आप लोगों का Google Classroom होगा. A little bit about Google Classroom, then I'll be switching to Google Forms, right? And I expect कि आप लोग थोड़ा interactive होना आपके लिए तो बहुत ही must है, because आप लोगों का जो post afternoon जो session है, वो आपके presentation skills पर भी बहुत depend करता है, right? So उसमें फिर be prepared, because we'll be interacting online, and it will be a two-way interaction. So don't be shy, and we'll be using this platform for interaction, okay? So inshallah, I'll be meeting you again tomorrow, same time. Okay, take care. Allah Hafiz. Very